You'll chipko with me, then how will I go? You go like this. I'll go like this. आपको पकड़ के. How will Mama drive? You won't drive. You'll just stay. I have to reach on time, otherwise I'll again get late. आपको कल बहुत सारा काम मिस हुआ मम्मा का. चलो, I'll see you. Stay properly, okay? Daddy, आपको का doll house देख लेना. Hi darling, this is Aparna Shah. Thank you so much for coming on my channel. I hope you're liking the content that we are creating. And अगर आपने मेरा इसके पहले वाला vlog देखा होगा, you must have seen that I was supposed to go to Pune, but because of certain circumstances I couldn't. So I am leaving today. It's 6:30 and I have already left. और ये सबसे difficult time होता है to leave home and move anywhere where you can't come back home to your family at nights. They say that you kind of grow out of it and you get used to it, but I think I've been traveling since December. Beach mein lockdown mein I didn't travel, but I still haven't grown out of this. This is easy as the most difficult thing I ever do probably. Though I have a lot of friends in Pune and they take really good care of me, but वही है, पूरे दिन काम करने के बाद ना when I come home and I don't see Aku and Jesha, वो बहुत difficult हो जाता है. But I think when you work you probably provide a little more quality life to your family, so that's one of the only reasons I work. Abhi I'm going because spa started again and I am so happy. Abhi tak last week when I was traveling, cult had not opened up and I was just kind of doing certain very little amount of exercise on my own. But thankfully ab cult shuru ho gaya hai and I will be joining my boxing again. It's been 9 bloody months without boxing and I have never missed anything as much as I miss boxing. So I'm so happy 16 that will start, and from here I am going to get my petrol filled and from there I will take you guys with me to see my spa. Please let me know in the comment box what you think of it, and yeah, chalo Pune saath mein. Just look at the halat, it's too early to be waking up and leaving. I think बहुत ही कम लोग उठे हैं और मेरे जैसे तो बिल्कुल ही नहीं उठे हैं because I'm such a sleep log. So in my last vlog, some people asked me where do you stay when you go to Pune. So जब lockdown नहीं हुआ था and COVID was not a thing, I had basically tied up with a hotel. So I tied up with them for 20 days. I used to basically give them the entire 20 days ka amount at the start of the month, and I used to, whenever I was traveling, I could go and stay there. I had to pre-inform them a day before. So that was working really well for me. But with COVID, I'm a little scared to stay in hotels. So I'm basically jumping, hopping and skipping amongst all my college friends ka ghar. And very sweetly, I mean, I have been blessed that ways that I have done my college. So I think by January, February, I'll get the possession of my house. Tab tak mein, every week I stay at a new friend's place. I call them up. New friends as in my college friend's place. And I call them up and I stay with them, and it's like a really great get together because I feel जब आप friends के साथ रहते हो ना, वो 2 घंटे कॉफी पे मिलना वाला feeling with college and school friends, I don't get it. I feel you should stay with them overnight, morning chais, everything is important with them. So I'm getting to do that. That's really nice. I really enjoy doing it. So yeah, that's the solution to my staying as of now. And I hope possession mil jaye ghar ka jaldi. I've told the builders that I need the possession ASAP. अभी ना I'm seeing बॉम्बे में ट्रैफिक बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, और अगर ट्रैफिक डेवलप हो गया मतलब आप 2 घंटे और बुरी तरह से फंसोगे. So I'm not filling up my fuel right now. I'll fill it up when I have crossed Mumbai city and I've reached the highway. So अभी मैं directly जल्दी I'll try and cover as much as I can before the traffic builds up.
ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हो, ये बेसिकली मॉर्निंग 7 o'clock ट्रैफिक है। और बिकॉज वी आर मूविंग, बॉम्बे की लैंग्वेज में इसको एब्सोल्युटली नो ट्रैफिक बोला जाता है, बिकॉज हम मूव कर रहे हैं, वी आर नॉट कॉन्स्टेंटली पुटिंग आवर क्लच एंड ब्रेक। यार 7 o'clock इतने लोग कैसे रोड पे आ जाते हैं? आई हैव नो क्लू। इट्स सच अ चैलेंज फॉर मी टू गेट अप दिस मॉर्निंग एंड मूव आउट। सो बेसिकली बहुत जोर से वापस से गड़बड़ हो गई है इस बार, पता नहीं क्या हो गया। दिस टाइम गोइंग टू पुणे हैज बिकम जिंक्स्ड। अभी फर्स्ट टोल आया एंड आई रियलाइज्ड दैट आई हैड फॉरगॉटन टू कैरी माय वॉलेट। मैं और जतिन कुछ काम कर रहे थे कांस के संग लास्ट मोमेंट, एंड आई थिंक वो वही रात में छूट गया। So अभी I had precisely 45 rupees. Thankfully Jatin leaves a little money in the car, तो वो change पड़ा रह गया था। So my first toll got done. अभी second toll के लिए I told Jatin to recharge the FASTag, और जब तक मैं पुणे पहुंचूंगी I have asked a friend of mine to deliver some cash at the place where I'm staying. मेरी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एवरीथिंग इज इन द वॉलेट, सो आई हैव टोल्ड हिम टू सेंड मी द पिक्चर। सो फार अभी तक और सब सॉर्ट हो गया है। ओह गॉड यार, मतलब बस मैकडॉनल्ड्स में कॉफी पीने के भी पैसे नहीं बचे हैं। आई थिंक आई विल गो देयर एंड आई विल, और प्लस आई डोंट यूज जीपे एंड ऑल the other apps like Paytm and all. I'm not very technologically enhanced on those things, so I think I'll just reach and ask Jatin to pay, because मुझे coffee चाहिए। I'm very very sleepy. I slept around I think 3 o'clock and I had to obviously get up at 5:30, और मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि I'm gonna stay over at my cousin's place this time for a week, and my cousin's been in Hyderabad for the past I think 4-5 months. तो मुझे ये लग रहा था कि घर ना पूरा खाली है। अब घर खाली है तो वहाँ पे लिजर्ड्स आ जाती हैं, एंड आई हैव अ क्रेजी फियर ऑफ लिजर्ड्स। तो अभी मुझे 3 बजे तक रात को नींद नहीं आ रही थी, ये सोच के कि अगर वहाँ लिजर्ड आ गई होगी, बिकॉज देयर इज गोना बी नोबडी, वो भगाएगा कौन। सो देन फाइनली 3 o'clock पे रात को मैंने आई लुक्ड ऑनलाइन पास के होटल्स के भी ऑप्शंस, बिकॉज माई फ्रेंड्स हु आई कैन स्टे ओवर वो बहुत दूर है फ्रॉम माई प्लेस ऑफ वर्क, so it takes me almost an hour, and this time I didn't want to travel that much. So मैंने साया जी भी देख लिया है, वो मेरे वर्क प्लेस के पास में होगा। So I'll just go to my sister's place, और अगर वहाँ पे lizard हुई तो I will shift to the hotel for the night, and because रात को I don't want to go to anybody's place late, and मुझे काम करते करते लेट हो जाएगा। So I think tomorrow I'll figure out and where to stay. आज तो फिर अगर मतलब blizzard हुई तो फिर होटल में ही रुकना पड़ेगा, because I will only be able to go back from work around 8-9, और फिर 1 घंटे मुझे नहीं ट्रैवल करना। So देखते हैं और क्या होने वाला है। I'll keep you guys tuned. Bye. So Jatin was trying to transfer some money on my FASTag, but उसमें भी कोई इशू आ रहा है, सो ही इज रश टू द बैंक नाउ। आई होप एम्प्लॉयज आ गए, इट्स जस्ट 9:30 एंड आई एम गोइंग टू मैकडॉनल्ड्स। आई विल जस्ट हैव सम कॉफ़ी। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे कॉफ़ी पीने वाली हूँ। इफ दे हैव जीपे एंड ऑल तो जतिन ट्रांसफर कर देंगे, अदरवाइज आई प्रोबेबली रिक्वेस्ट समबडी टू बाय मी द कॉफ़ी एंड आई आस्क जतिन टू ट्रांसफर ऑन देयर जीपे, एंड फिर जब फास्टैग चार्ज हो जाएगा देन आई बी एबल टू गो, बिकॉज मेरे पास आई थिंक 5 रुपये और बाकी है। So finally I came to McDonald's. I asked them if we could transfer any amount. They said, ma'am, हम phone number नहीं दे सकते, आप जब order करोगे so the swipe machine will generate a barcode, आपको उस पे GPay या Paytm करना पड़ेगा। So that option was out, and so then there was a very sweet lady next to me. I went to her and I told her that I've forgotten my wallet, or I need some amount to carry with me because FASTag भी नहीं हो रहा है, Jatin वो is in the bank.
So she basically gave me some cash and I told Jatin to transfer on her account. So now I'm sorted with my coffee and my toll. Though I called up a friend and I told him कि अगर मेरा अब arrangement नहीं हो रहा है, he told me he is in Pune and he told me तुम जहाँ भी फंसोगी just stop there, send me your location and I'll reach and pick you up. Because if you remember morning में मैंने बोला था that I am not getting my fuel filled because I wanted to reach on time. And I thought मैं एक बार बॉम्बे का ट्रैफिक कवर कर लूंगी, then I'll fill my petrol. So everything is sorted, but बहुत that मेरी पूरी नींद मतलब all the drowsiness is out. I don't really need a coffee now. And but yeah, now for now I am sorted until I reach. And फिर पुणे पहुंच गए तो पुणे तो मतलब अपना देश है, वहाँ तो every place I know I have people around. So अभी मैं पुणे पहुंच जाऊंगी. Finally reached the toll and finally I have the money to pay. अब बेसिकली मैं कोई भी काम है ना जो बाहर का, वो आई एम नॉट ओपनिंग द विंडो बिकॉज कल जो स्यापा हुआ है उसके बाद अब जो हो गया है उसके बाद आई नीड एब्सोल्युटली नो स्यापा फॉर नेक्स्ट 2-3 days. आई वांट माय लाइफ टू गो अ लिटिल नॉर्मल एंड बोरिंग. सो इसलिए मैं डोर खोल के आई एम डूइंग ऑल द वर्क. आई एम नॉट टचिंग दिस विंडो ओनली. आई हैव रीच्ड पुणे. आई थिंक नेक्स्ट 2 minutes में आई विल रीच माय वर्क प्लेस. Now today I've come after almost 4 days, so मेरे को बहुत सारा काम है. So I'm not going to cover this part today. I will probably cover it tomorrow after finishing all my work. So finally I've reached the place and now I'm going to go up and finish this vlog here. If you liked the content, please subscribe to my channel and hit the bell icon. And until I see you guys again, keep shining.